चलती रहती है। कभी ऐसा होता है कि एक बॉलर आपको काफ़ी बार आउट कर जाता है। तो उस दिन मेरा दिन अच्छा था कि मैंने जो भी किया। आपका दिन अच्छा था और अजमल का खराब। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब सारी इंडियन टीम का दिन खराब था, एक एक दिन वो पिट रहे थे, आपने कैसे हिमाकत की 100 बनाने की जब बड़े बड़े सीनियर नहीं बना रहे थे? बस सर, काफ़ी टफ टाइम था वो टीम के लिए और ज़रूरी था कि एक अपने आप से जो इंसान बात करता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बात अपने आप से करी रादर देन कि दूसरे लोगों की बातें सुनूं। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिली। और अगर आप वैसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर 2012 का अब तक रिकॉर्ड देखें तो 5 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कई प्लेयर ये भी सोचते होंगे कि सारा खेल यही खेलता है, हमें मौका ही नहीं देता है। ऐसा अगर सोच रहे हैं और मैं ऐसा खेलता रहूं तो अच्छी बात ही है, क्योंकि टीम के लिए फ़ायदा होना चाहिए। मेन सबका एम वही रहता है और जितना लंबा मैं खेल सकूं टीम के लिए उतनी लंबी खेलने की कोशिश करता हूं। आप लंबा खेलते हैं, 183 बनाते हैं, 128 बनाते हैं, 107 बनाते हैं, लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी जब आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं। ये सर एक बचपन से आदत है मेरी कि एक मैं खेल रहा हूँ जो मेरा पैशन है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आउट होना और परफॉर्मेंस ना करना। तो भले ही वो सेंचुरी के बाद हो या ज़ीरो पे हो, मेरे को उतना ही गुस्सा आता है आउट होने पे, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं कि टीम को पूरा जिताएं। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। थोड़ा गुस्सा आता है। कंट्रीब्यूटेड टू मी गोइंग इनटू दैट स्पेस। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप जिन चीज़ों को एक सर्टेन लेंस से देख रहे होते हो, बिकॉज आप पैशन से खेल रहे हो, आप दिल से खेल रहे हो, बट बाहर चीज़ें वैसे परसीव नहीं हो रही हैं और लोग उन चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझते हैं और आपको उस लेंस से नहीं देखते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी आपको एक रियलिटी चेक देती हैं कि अच्छा, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर एंड यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू थिंक एंड बी लाइक यू। तो वो चीज़ें भी मुझे रियलाइज़ हुई और इंटेंशनली, एज यू सेड, मैं कोशिश नहीं कर रहा, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं फेक कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कंपेटिटिवनेस के जोन में पुश कर रहा था, बट इट वॉजंट कमिंग नेचुरली टू मी। आई एम अ पर्सन हु वेक्स अप एंड फील्स लाइक ओके, लेट्स सी व्हाट द डे हैज फॉर मी, एंड be part of everything that I'm doing through the day with absolute presence and involvement and happiness, and that's who I've always been. And people ask me a lot, how do you do this on the field and how do you carry on with so much intensity? I just tell them I love playing the game, and I love the fact that I have so much to contribute every ball, and I would give every inch of my energy on the field. And for me, it never felt abnormal. A lot of people on the outside watched me, and even within the team, they asked me, how do you keep up with it? And I just said just one simple thing: I want to make my team win at any cost, and if that means that I'm gasping for breath when I walk off the field, so be it. I mean, that's the kind of preparation I go through to be able to play like that. तो वो naturally नहीं हो रहा था और मुझे push करना पड़ रहा था, but I just didn't know it because I became this, this ideal kind of a sports person to look up to. And I mean, admit it. I mean, yeah, look, as I said, I'm very grateful for the fact that so many people get inspired by me, but you can't stop being a human being because of that. You also have to understand why people love you and support you. It's because you were yourself always. And even in these moments, I'm not shy to admit that I was feeling mentally down. And this is a very normal thing to feel. I mean, I'm a human being at the end of the day, and that should be a thing of, a space for people to say, hold on, if he can go through it and if he can experience the same, relax. It's normal to feel this way. It's not abnormal. Talk about it, discuss with people. No one's going to think you're weak. People are actually going to feel, empowered Yeah. and compassionate for you, and you're going to get help from sources you didn't even imagine. But we don't speak because we're hesitant. We don't want to be looked at as mentally weak or say to Australia or England or something like that. I literally sat down 2-3 months before, and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head
And invariably, when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you? Because if something looks difficult, and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way, your chances of succeeding become very, very low. The thing that helps